तो हमारा अभी तक वेक्टर्स चल रहा था और वेक्टर्स में हम यूनिट वेक्टर्स तक आ गए थे और मैंने बताया था कोई भी वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन। मैंने आपको दिखाया था कि अगर कोई वेक्टर ए है तो दिस कैन बी रिटन एज magnitude of A multiplied by a unit vector in its direction. तो यहां पे जो A कैप है ये यूनिट वेक्टर है along the direction of A. Generally unit vector is represented by small n. स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि यूनिट वेक्टर क्या है, केवल डायरेक्शन को दिखाता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर जो n है इट हैज अ मैग्नीट्यूड 1 ओनली, इसमें केवल क्या होता है डायरेक्शन। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस में के डायरेक्शंस आई जे और के वेक्टर से लिए जाते हैं यूनिट वेक्टर से, और हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई यूनिट वेक्टर से लेते हैं, वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे यूनिट वेक्टर से लेते हैं और जेड एक्सिस का डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से लेते हैं और इसे मान लेते हैं ओरिजिन, इसे मूल बिंदु मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। तो आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या करेंगे, मींस उसे कंपोनेंट कैसे फॉर्म करेंगे, या आप कह सकते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इसके लिए कोई वेक्टर मान लेते हैं, सपोज वी हैव एनी वेक्टर ए, इस वेक्टर का अगर हम एक्स और वाई एक्सिस बना दें इसके ओरिजिन से, इसके इनिशियल पॉइंट से, इसके टेल से, तो सपोज मैंने ये एक्स एक्सिस बना दिया और यहां बना दिया ये वाई एक्सिस बना दिया। अब ए वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस था और ये क्या था, ये वाई एक्सिस था। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए के हेड से एक्स एक्सिस पर और इस लेंथ को मान लिया ए एक्स। इस लेंथ को ए एक्स मान लिया। सिमिलरली इसके हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस लेंथ को क्या मान लिया, और इस लेंथ को मान लिया ए वाई। If this vector is making an angle theta with the x-axis, suppose this is theta. If this is ay, then naturally this will also be ay. Then what will be cos theta?
base upon hypotenuse. So cos theta is ax divided by a. Naturally, we are taking the magnitudes here. So cos theta is ax upon a. It means ax is equal to a cosine theta. Similarly, if we take sin theta, then we obtain ay is equal to a sin theta. So if we know the magnitude of a vector and the angle it is making with either x-axis or y-axis, then we can find out its components. That is ax and ay. What is ax? Ax is component of vector a along x-axis. And what is ay? Component of vector a along y-axis. This is ay. If we square and add these two, we find out that ax square plus ay square is equal to, what we find out? A square cos square theta plus a square sin square theta. And if we take a square common out there, so we get a square multiplied by cos square theta plus sin square theta, and the value of cos square theta plus sin square theta is 1, always 1. So that is a square. तो इससे हमें क्या मिला? If we know the values of components, simply components ax and ay, then we can find the value of the vector a. That is a is equal to square root of ax square plus ay square. Similarly, if we know ax and ay, then dividing ay with ax, ay divided by ax is tan theta. Sin theta divided by cos theta is tan theta, which implies that theta is tan inverse ay divided by ax. So if we know the values of component ax and ay, then we can find the original vector, the value of original vector a, magnitude of the original vector a. We can find out the a, the angle that this vector is making with the one of the axis, yani x axis or y axis. Theta is the angle the vector a is making with x axis. Then 90 minus theta will be the angle. This will be 90 minus theta will be the angle which it is making with the y axis, and vice versa. If a is known and angle is known, then we can find out ax and ay, and if ax and ay are known, then we can find the value of a as well as theta. And another thing, how we can represent vector a in terms of ax and ay. So we can represent vector a as ax, magnitude of x component, because vector is here, so magnitude as well as direction should be there, multiplied by unit vector I. The direction of ax is this, along the x-axis. If we take ax vector, then ax will be this. This is ax vector. And the vector ay, this will be vector ay. What is a? And this is vector a.
So AXI plus AYJ, because the direction of x-axis is taken represented by unit vector I, and the direction of y-axis is represented by the unit vector J. Unit vector I, unit vector J. So we have incorporated the magnitudes as well as direction here. So A can be represented as, in terms of component, vector A can be represented as AXI plus AYJ. AXI plus AYJ. What will the case in 3 dimension? Suppose for 3 dimension we take a parallel piped. Let me form a parallel piped like this. I am taking these sides a little bit longer to represent the directions of x, y and z axis. Suppose this is x axis, this one is y axis, and this represents the z axis. It means unit vector I, y means unit vector j, unit vector k. Unit vector is always represented by a cap above the vector sign. So I cap, j cap or and k cap. So these are ये मिलाना ये भूल गए हम. Where is A? This is A. This one is A. Visualize in 3 dimension. So this is in fact x axis, y axis. Here it is z axis. And where is A? A is somewhere here in between the 3 axes. In between the 3 axes. A is somewhere here. But at board we can draw like this. This is A. Where will be AX? Where will be AY and AZ? The perpendicular component along x-axis will be AX. The perpendicular component along y-axis will be AY, etc. So अगर हम देखें इसे दोबारा बनाएं, redrawing it. X, Y, Z. This one is A. So A is making an angle, suppose alpha with the x-axis. Z-axis is like this, and this A is in between here, in between all the 3 axes. It is making an alpha angle with the x-axis, angle beta with the y-axis. Suppose it is making alpha, beta, and gamma with the z-axis. This is suppose gamma. So what will be AX? Then AX will be A cos alpha, AY will be A sin A cos beta, AZ A cos gamma. Here it is cos, cosine, it is here sine. So you should not get confused with this. This is also cosine. In fact, how it is cosine? ये हमने A लिया था, ये थीटा लिया था, ये 90 माइनस थीटा लिया था, ये 90 माइनस थीटा था. This angle was theta, this was 90 minus theta. So if we are looking at for the x component AX, so what was AX? AX was magnitude of A multiplied by cosine of the angle which it is making along the x-axis with the direction of x-axis.
So x was a cos theta. What is ay? Ay also there, a multiplied by cosine of the angle which the vector is making with the y-axis. So it was in fact a cos 90 minus theta, and that is written as a sin theta, because cos 90 minus theta is sin theta, nothing but the sin theta. Again, similar to two dimension case, what will be a in three dimension? A vector a in three dimension can be written as ax I plus ayj plus azk, and magnitude of a can be written as ax square plus ay square plus az square. So that was all about the components of a vector और resolution of vector. अब लेते हैं law of sines and cosines. लॉज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस. तो इसमें हम दो वेक्टर ले लेते हैं. मान लिया हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, और इनका हमें रिजल्टेंट बना लेते हैं, रिजल्टेंट फॉर्म कर लेते हैं. तो हमने ए ले लिया, ये ए ले लिया, बी ले लिया, एक के हेड से दूसरे का टेल जोड़ दिया, और आपको पता है रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं. इसका रिजल्टेंट आर होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा आर. अगर ए और बी के डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है, if the direction of B is making an angle theta with the direction of A theta, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए नीचे. सपोज दिस इज P, दिस इज Q S T. मान लिया P Q S T है. तो व्हाट इज P Q? We are talking about magnitude only. So P Q is A. What is Q S? QS is based upon hypotenuse, so QS is B cos theta. cosine theta लगा दीजिए इस ट्राइंगल में QTS में, तो QS is B cos theta. ST similarly ST is B sin theta. यहाँ sin theta ले लीजिए, sin theta is परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो ये हो गया अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. PT स्क्वायर इज PS स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम. PT means R square is PS square. PS means here PS is PQ plus QS. PQ plus QS. So PQ is A plus B cos theta. So A plus B cos theta whole square plus ST square plus B sin theta whole square. So this becomes A square. B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. B स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. तो सिंपली B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एंड अनदर 2AB cos थीटा प्लस 2AB cos थीटा.
This r square is a square plus b square plus 2ab cos theta. This is known as law of cosines. Again, we're drawing this again. Suppose I draw this again like this is r, this one is a, this is b, this is b, this is r, this one is a, although it is a very rough diagram, b, this is theta, this one will be 180 minus theta. Suppose this is alpha and this one is beta. जो साइड ए है, जो वेक्टर ए है उसका अपोजिट एंगल अल्फा मान लिया, जो वेक्टर बी है उसका अपोजिट एंगल बीटा मान लिया, और आर के अपोजिट एंगल तो क्या था, 180 माइनस थीटा था. सो वी कैन इजीली प्रूव दैट a upon sin alpha is equal to b upon sin beta is equal to r upon sin 180 minus theta. And 180 minus theta is known as sin theta. Sin pi minus theta is sin theta. This is known as law of sines. Another thing is that you can find out the value of tan alpha. Tan alpha is b sin theta upon a plus b cos theta. तो ये इसलिए दिए हुए हैं, ये सब फॉर्मूले ही आपको याद रखना है कि अगर दो वेक्टर दिए ए बी और उनके बीच का एंगल थीटा दिया है तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जा सकता है आर. अगर दो वेक्टर दिए उनके बीच का एंगल दिया है तो आप अल्फा भी निकाल सकते हैं. अल्फा मीन्स कौन सा एंगल, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं. आपको ए गिवन है, बी गिवन है और थीटा गिवन है, देन यू कैन फाइंड आउट अल्फा, यू कैन फाइंड आउट दिस अल्फा, और थीटा भी गिवन है. जब अल्फा निकाल लिया आपने, थीटा गिवन था, तो आप बीटा भी निकाल सकते हैं. तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं. इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा आपका वेक्टर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे.